बसेस में मुझे सेफ्टी नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी। वो क्राउड की वजह से? क्राउड की वजह से और बहुत कुछ मिस हैपनिंग भी हुई है मेरे अच्छा, साथ। अच्छा। जी। तो वो भी हुआ है, तो मुझे तो बस में ट्रैवल करना मतलब अभी तो हम लोग जाते हैं ना, हाँ जी। तो बस में अच्छा होता है, अभी सब कोई ना भीड़ भाड़ होती है ना कोई परेशानी है बस में। जी। सब तो कुछ आप मेट्रो से भी जाती हैं कभी? नहीं, मेट्रो से नहीं जाती भाई, मैं बस में ही आती हूँ जाती। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता. Says Geet when she boards the general coach of a train which she had almost missed in the film Jab We Met, directed by Imitiaz Ali. What is the connection between an AC coach and being a girl? Is there any? Does your gender determine which coach you should travel by in a train, or does it determine which mode of transport you should opt for? Are there any other factors which determine it? To find answers to these questions, I went on the streets and had some really interesting conversations. Okay, so that you have traveled in all the coaches, do you see a difference in the sleeper ones and the AC ones? Of course. What is it? Can you tell us? First of all, the gentry, Okay. because by default, I shouldn't be saying all this, but yes, by default, people who are traveling in a general compartment, they belong to a certain category, they have a certain lifestyle, and their conditioning is such that their behavior becomes at times very rough. So it's all up to you how you handle it. Right. And because you have to be very vigilant while traveling in those compartments. It's not that you don't have to be vigilant while traveling in the AC compartment, but somehow you're more comfortable and relaxed. At the back of your mind, you know that, okay, I am at a better place. Right. So देखिए मतलब लुकिंग एट द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल्स इन ट्रेन, सेफ्टी इशू एज सच कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्राउड का जो एक बिहेवियर होता है, क्राउड कई बार मतलब जैसा कि हम लोग अपने बहनों से अपने दोस्तों से सुनते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ पब्लिक स्पेस, क्राउड ऑफन बिहेव इन अ वेरी इनएप्रोप्रिएट मैनर. तो वहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट असॉल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्राउड इतना इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि गर्ल्स डोंट फील वेरी सिक्योर व्हेन इट कम्स टू द स्लीपर कोचेज. In like Delhi, I usually prefer metro. Okay. In case of safety, I think it's one of the best options that we can opt in Delhi. And in case of like traveling generally, I guess if you travel like for long distance, obviously it's good to opt for air travel. Time consuming, it's not much time consuming, and yeah, it's also safe, Right. compared to train. Have you ever encountered something like that in a sleeper coach when you have traveled? like what? Like you have felt that it's not safe for me right now in a sleeper coach? See, I have never ever had come across such incident Right. where I have to. I mean, I can comment on that or I can share that, but subconsciously, yes, you feel that I cannot be at ease. I cannot just go to sleep without taking care of my stuff or taking care of myself. Right. So maybe because we have been brought up that way, that is how it is. Though I have never ever come across Right. such incident. Okay, so in metro, which coach do you prefer? The women's coach, or you travel in any coach? Depends on the crowd. Right. If the crowd is like too much, then I usually prefer the women's coach, or otherwise if I have lots of friends or anything, I don't doesn't matter. स्लीपर क्लास के साथ दिक्कत यह है कि कभी भी जब ट्रेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट घुसती है तो उस स्टेट के लोकल्स स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन के बिना भी बैठे होते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जिनकी सीट्स रिजर्व हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनको उनके सीट्स भी नहीं मिलते हैं. और दूसरा सबसे बड़ा इशू क्लीननेस और हाइजीन का है. क्लीननेस का लेवल काफ़ी लो रहता है स्लीपर क्लास में. तो ऐसा नहीं है कि वो साफ़ नहीं करते हैं, वो साफ़ करते हैं, बट मोस्टली जितने लोग होते हैं उनके वजह से वो गंदगी जो है बनी रहती है. ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि एसी में थोड़ा कंफर्टेबल सफ़र ज़्यादा रहता है. हाँ बिल्कुल. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिक्कत ये है कि जब हम लोग स्लीपर कोच में जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को लॉकर्स, चेन, इन चीज़ों को लेके चलना पड़ता है ताकि हम अपने सामानों को बांध के रख पाएँ. तो आप अपना नाम बता दीजिए एक बार. प्रवीण कुमार यादव. तो आप दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से बाहर से हैं? यूपी से. तो यूपी से आप मतलब जब अप डाउन करते हैं, पिछली बार आप घर कब गए?
लॉकडाउन में क्या आप घर जा पाए थे अपने? एक्चुअली कैसे कैसे जाते हैं आप? बस से, ट्रेन से, किससे सफ़र करते हैं? हम तो इस बार तो अपने साधन से गए थे। ऑटो से गए थे अपने? अरे कैसा रहा सफ़र? बढ़िया रहा। अच्छा, तो यूजुअली जब आप जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं या बस से जाते हैं? ट्रेन से ज़्यादा जाते तो ट्रेन में कौन सा कोच आप प्रेफर करते हैं? एसी कोच जाते हैं या स्लीपर कोच या जनरल? हैं, जनरल में जाते हैं। तो कैसा सफ़र रहता है आपका जनरल में? थोड़ा कष्टदायी होता है लेकिन अपने बजट के हिसाब से सही जाते हैं। मुझे ना नॉन एसी में चलना बेटर लगता है, मगर मेरी फैमिली है ना, कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। भाई साहब, ये A1 है ना? हाँ। थैंक यू। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। एसी कोच में मतलब ये लोगों का एक मतलब एक्सेप्टेड बिहेवियर मान लीजिए या आप जो भी कह सकते हैं, चीज़ें जैसी रखी रहती हैं, हम लोगों को उसके बारे में सेकंड थॉट्स नहीं लेना होता है। ठीक है। We feel quite secure in AC coach when it comes to the travel.